next guest is someone with a wealth of experience in the world of civil service. Please join me in welcoming Mr. Prabhat Chandra Chaturvedi, who will be sharing his insight on the path to become a civil servant. Friends, my senior colleague Lakshmi Rana ji has given you a good background of the whole subject. So I will not repeat. I will focus myself on your preparations only. I would emphasize one point that Mr. Lakshmi Narayan has mentioned, because you should be very clear about that and it is going to help you. You see, the approach of Government of India these days is to increase the catchment area for the civil services. As he mentioned, during our time, the age was 21 to 24 with 2 attempts. For IPS, the minimum age was 20. And there were 3 different exams in the same package. For IPS, it was different. For central services, it was different. For IAS and IFS, it was different. That pattern is no more here. Because the government wanted to change the whole system and the structure of examination so that more and more candidates could conveniently appear in the exam. The number of subjects that were available in those days, it has changed. The language allowed at that time was only English. I remember I wrote my exam in 74. In that year, the only option that was given to candidates that they could write essay in any language, in any of the scheduled language. But now you can select any language for writing your exam also. So why I am telling you this? कोई भी स्टूडेंट जिसने अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रॉपरली कंप्लीट किया है, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रॉपरली, जिसने प्रॉपरली कंप्लीट किया है, he can succeed in this examination. It is not necessary that you should have been a topper in your school or college or boards. If you have completed your studies properly, you can certainly succeed in the examination with proper coaching, direction, guidance. Now, the dates have been announced. You all know about the dates for the next year. And I am presuming that out of this group, there are some who are appearing for the first time. There are some who may be taking their second attempt or third attempt or fourth attempt. Now, when should you start preparing for the civil services? After graduation. That is the right time to start preparing for the CSC. I'm not saying that you will not do your post-graduation, but one must start preparing for the civil services as soon as you complete your graduation. Now, you have to first clear the preliminary examination. Now, preliminary examination, you have to be very careful. Because if you analyze the data that is now available in abundance of the candidates who appear in the civil services examination, you will find some toppers who have just made the prelims with a few marks. They could have missed the main examination. So prelim is very, very important because the competition is the maximum there. I am giving you some data about which you must be already aware. जैसा बताया गया, करीब 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं, रफली 5 लाख लोग बैठते हैं. आई एम गिविंग यू राउंड फिगर्स. 10,000 के करीब जो प्रीलिम्स में लोग आते हैं, इट इज 11 to 12 times, बट आई एम गिविंग यू राउंड फिगर. और 10,000 में से फाइनली 1,000 लोग सेलेक्ट होते. So the competition is very tough. This is the toughest competition of the world. And one of the top 5 toughest examination of the world.
So these are the ground realities. These figures are not to scare anybody, but you must understand what you are facing, what you are going to face. The other thing is, you do not know your competitors. आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको मालूम है आपके साथ कौन बच्चे हैं, कौन अच्छा है, कौन कम. Here you just don't know. The entire country is competing. So preparing for preliminary examination is very, very important. Now your institute will guide you what books you have to read. What I would suggest is, in addition to whatever you are doing, you must read NCERT books. Must. From 9th to 12th. This should be in addition to whatever is being told to you. Another thing, in addition to NCERT books, I am talking of prelims only at the moment. You must read newspapers. There are publications of National Book Trust. There are publications of the publication division of Ministry of Information and Broadcasting on various subjects. I think this information can be given by your institute where you are going for coaching. These you must read. प्रीलिम्स में क्या है कि उन्होंने टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं कि हम इनमें से पूछेंगे. प्रॉब्लम क्या है कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे ये आपको नहीं मालूम. एंड दिस चेंजेस एवरी ईयर. उन टॉपिक्स में से किस टॉपिक्स में से 200 में से 20 क्वेश्चन आएंगे, किस में 5 आएंगे, ये यू डोंट नो. So your knowledge about all the topics has to be good. And that is why I am saying, in addition to whatever books are suggested, whatever papers, tutorial papers are given to you, you must read NCERT books. Why I am saying this? Because the examiners who set these papers, they use those books. So this is very important about the prelims. Now, what should you do about mains? You have to start your preparation for prelims and mains right from day one. ये आप नहीं कर सकते कि हम प्रीलिम्स में पास हो जाएंगे तब हम मेंस की तैयारी करेंगे. नो, एज आई सेड, द कंपटीशन इज एक्सटेंसिव. एक एक नंबर से पोजीशंस मिस होती हैं और एक एक नंबर में सैकड़ों पोजीशंस हो सकती हैं. इसलिए दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और मेंस में ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना. अब बहुत सारे, लक्ष्मी नारायण जी ने बात बताई, हम लोगों के टाइम में पैटर्न फर्क. साइंस स्टूडेंट वुड हैव टेकन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, नॉट ए सब्जेक्ट जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बट नाउ द सिस्टम इज डिफरेंट. यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन पेपर, वन सब्जेक्ट. In whichever subject you are comfortable, it should normally be the subject in which you have done your graduation or post-graduation, which you should select as optional. ऑप्शनल की तैयारी भी आपको अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी और उस तैयारी का फायदा आपको प्रीलिम्स में भी होता है. बिकॉज देर आर मेनी सब्जेक्ट्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देर आर मेनी सब्जेक्ट्स जो कि कवर करते हैं उन टॉपिक्स को भी जो प्रीलिम्स में आते हैं. तो आपके ऑप्शनल की तैयारी भी अभी से शुरू हो जानी चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी भी अभी से शुरू. और इंटरव्यू में इसलिए नहीं टच करूंगा क्योंकि दैट इज नॉट द स्टेज टुडे. दैट स्टेज विल कम लेटर. एंड देन सिंस वी हैव बीन सिटिंग इन द यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड्स, एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी विल गिव यू गाइडेंस एंड टिप्स अबाउट दैट. तो ये मैंने आपसे बताया कि प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपकी तैयारी अभी से ही शुरू हो जानी चाहिए. नाउ वेदर वन शुड जॉइन कोचिंग और नॉट, I would strongly advise that you must join coaching. कोचिंग से क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी नॉलेज है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे स्ट्रेटेजाइज किया जाए, कैसे फोकस किया जाए, उससे ये फायदा. इसलिए कोचिंग का हमेशा आपको फायदा हो.
लक्ष्मी नारायण साहब ने बताया राउत स्टडी सर्किल के बारे में. आई हैड ऑल्सो ज्वाइन राउत स्टडी सर्किल ओनली फॉर इंटरव्यू पर्पस, नॉट फॉर मनी. अब मेंस की तैयारी में जो एक खास पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट कोर्स इज वेरी ह्यूज. उसे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है वो समुद्र है एकदम. यू थिंक ऑफ एनी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, एंड यू विल फाइंड इट समवेयर, आइदर इन प्रीलिम्स और इन एसे और इन जनरल स्टडीज. जो 4 पेपर्स आते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो टॉपिक मिलेगा जरूर. देयर इज नो टॉपिक विच इज नॉट कवर्ड देयर इन सम और द अदर वे. इसलिए इस समय आपको फोकस करना चाहिए अपने मेंस पे और प्रीलिम्स पे. कौन से पेपर्स देखे जाएं? आई वुड एडवाइज कि पिछले 10 साल के पेपर्स आप जरूर देखिए. स्ट्रक्चर में चेंज हुआ था 2011 में, मेजर चेंज. देन अगेन इन 2015 जब आपका जो पहले 2 कंपलसरी माने जाते थे प्रीलिम्स में, उसमें से एक हटाया गया. तो आपकी जो तैयारी है वो मेंस और ऑप्शनल्स की शुरू हो जानी चाहिए. कितना पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज अप टू इंडिविजुअल. वो सब इंडिविजुअल के. सब लोग आपको बताते रहेंगे टेंशन में मत रहिए, स्ट्रेस में नहीं रहिए. वी आर ऑल ह्यूमन, यू विल ऑलवेज बी इन स्ट्रेस. कितना कम कर सकते हैं आप, ये डिपेंड करेगा कितनी आपने तैयारी अच्छी की. एक डिबेट बहुत चलता है कि न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए. व्हेन आई वाज इन योर पोजीशन, आई हेटेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बट आई कुड अफोर्ड इट. उस समय पैटर्न फर्क था, उस समय एग्जामिनेशन का पैटर्न फर्क था. नाउ यू कैनॉट अफोर्ड इट. यू हैव टू. आपको अच्छा लगे या न लगे, आपको 3 पेपर पढ़ने हैं. 3 नेशनल पेपर्स. एक इकोनॉमिक पेपर, मैं बताऊंगा क्यों पढ़ने. एक इकोनॉमिक पेपर, एक इंग्लिश, नेशनल पेपर्स की बात कर रहा हूँ, नेशनल डेलीज, और एक हिंदी. नेशनल डेलीज में हिंदी में और अंग्रेजी के अखबारों में फर्क. और इन पेपर्स में आपको ये नहीं पढ़ना है कि आज उसकी वहाँ हत्या हो गई, आज उसके साथ ये हो गया. नो. आप कर्सरली उसमें देखिए. व्हाई दिस पेपर्स? इन पेपर्स में करंट अफेयर्स के अलावा इन पेपर्स में गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट के एक्शन प्लान्स, गवर्नमेंट क्या सोच रही है. फॉरेन आजकल फॉर एग्जांपल वेरी कंट्रोवर्शियल इशू अबाउट द इजरायली एंड फिलिस्तीनी. कई लोग कह रहे हैं साहब आपने पॉलिसी चेंज कर दी, आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, फिलिस्तीनियंस को नहीं कर. व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप पेपर्स में जाएंगे इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके जहन में रहेंगी. और करंट अफेयर्स, जैसा मैंने कहा, आपके प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स में किसी से यू नेवर नो अबाउट द यूपीएससी. 30 सवाल आ गए मान लीजिए, 200 में से 10 भी आ सकते हैं. यू डोंट नो, सो यू कैनॉट टेक दिस रिस्क. जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रीलिम्स इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन. इट मे नॉट बी टफ, बट द कॉम्पिटिशन इज द मैक्सिमम. You may do well, but you may not succeed because of the competition. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़पेपर्स आप पढ़ें. जैसा मैंने कहा, आपकी उम्र में न्यूज़पेपर मुझसे कोई कहता है, मैं कहता मैं बिल्कुल नहीं. इट्स अ वेरी बोरिंग थिंग. सो आपको न्यूज़पेपर्स में से जो पॉलिसीज़ हैं, न्यूज़पेपर में एक चीज़ ज़रूर पढ़िए, बिकॉज दैट फोकसेस ऑन द क्रीम ऑफ द इश्यूज देयर. दैट इज़ द एडिटोरियल. वो ज़रूर पढ़िए. तो ये न्यूज़पेपर्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना और प्रीलिम्स की तैयारी करना, ये मैं समझता हूँ कि इस समय आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू शुड फोकस योर टाइम ऑन दिस, इंक्लूडिंग द मेंस. आप ये मान के चलिए कि प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेंगे, और प्रीलिम का इम्तहान देने के बाद आप प्रीलिम्स भूल जाइए. सही जवाब ढूंढने की कोशिश मत करिए.
you forget about prelims. Concentrate on mains, presuming that yes, you will clear. So these are some of the tips that I wanted to give you, because अभी और भी speakers हैं, तो मैं वो नहीं करूँगा, but you are all welcome to contact me. I am stationed in Delhi. The Plutus can give you my details. My office is in Vasant Vihar. So anybody is welcome there to come, discuss with me, take whatever guidance want, but through Plutus. Don't bypass. Don't bypass. Don't come to me directly. So these were some of the issues which I just wanted to raise. I didn't want to. There are many points, but we'll discuss.